Welcome back. You're watching us on Sports 18 and Geo Cinema. This is match day 11 of the round robin league stage of JetSynthesys presents the GEPL, the Global E-Cricket Premier League. और आज अब केवल 4 मुकाबले रह गए हैं और हम बहुत करीब हैं अपने नॉकआउट्स के कंटेंडर्स को फाइंड आउट करने में. With me is Roshan Shetty. Roshan, this matchup, the second matchup of the day, the London Rhinos versus Dubai Vipers. This is going to be mega. This is going to blow everybody's socks off. Well, it certainly will be. I'm pretty sure more than all the fans and everybody, the statisticians are scratching their head about how things are going to go. But yes, if I could put it in a very easy way, London have to win this, going on top of the table, which will kind of almost seal the deal for them. Yeah, and it's not just London who have to win this, it's also Dubai have to win this. It's very, very simple. Whoever wins this is going to get automatic qualification. We'll look at the scenarios, but let's take a look at today's fixtures. New York versus Chennai, that was the first match of the day. New York won that game with relative ease, and that was an important win for New York. Get those 2 points, now they are top of the table. That would have given them an easiness and a bit of a comfort about the day. Of course, when they knew that they were playing Chennai, who have, kind of had like a mixed luck so far. I mean, the only last 2 games in Chennai is if they could actually spoil somebody's party. Unsuccessful in doing that. Like I mentioned earlier, it's more of the stakes being high towards the other side. I think New York does pretty well out there. Right. New York also have the second game in the day, but they also, oh, look at that. Everybody predicted New York, not many rooters for Chennai at the moment. They do have a second game in the day, as we were talking about. That will be match number 5. But Roshan, again, match 2. I'm only sticking to London. I hope I get that right. London have been in good form, obviously, but 3 of us, including Cripps and Floki, our casters, and obviously myself, we have gone for Dubai. It's going to be an even split here, so we will see how that pans out. So it is the big game. Match day 11, match number 2, the big game. London Rhinos, Dubai Vipers. London Rhinos second in the table, Dubai Vipers third in the table. The equation is very, very simple. You win the game and you get automatic qualification. But I have to ask you this, Roshan. Both of them, if they lose, either side which loses, they will be wondering about their net run rate, especially Dubai, which has a very bad run rate, negative 0.3. It certainly is affected, because of the kind of games that they've had last time around. It will, of course, be a wait and watch for them eventually when they go forward. But again, I don't think they would really want to get in the space of it. They would want to go forward and win clean, if possible, with a good margin. Right, looking at London Rhinos then, Tejas, Sukhpreet, Pravin, Shivam, Amit, and Sagar. This is a good lineup, in-form lineup. 4 players with almost 200 runs or 150 plus runs. It's going to be a tough challenge for Dubai. Of course, will be. I think a lot of responsibility will be on the likes of Tejas because he has to come there. He's had 202 runs so far. No wickets whatsoever. But I think my eyes will be on the likes of somebody like a Sahu, who's the vice captain, who's got 9 wickets, but also has 162 runs. You have to get your all-rounders into place out here. Yeah, Shivam, he's known as 9 wickets for him, 162 runs. But also Sagar, who's taken 10 wickets. He is good with his push-ups and everything, but he's also good with the ball. We'll also take a look at the Dubai Vipers. And it's a little different because you have 2 players who are amongst the runs and the wickets, 200 plus runs for both Manish and Mukesh, standout all-rounders. They have 14 and 13 wickets respectively. And then Ankit came to the party. Ankit Roy came to the party in the last game with that 40-yard brilliant knock. He's on 152. His 6 hitting percentage now up to 7%. How crucial is Roy today again? But of course, I think he's just like that, if I can call him like a VIP sort, who comes late to the party and says, look, I'm here to steal the show, but what's more important is, the point is that he has the runs, which is making it so easier. I mean, the dependency, we all know that Mukesh and Manish have been the players who they've throughout been dependent on. Like we have seen the likes of Bishwas for, the Delhi side. This is going to be a team game at the end of the day. And Harbhajan and Vijay have been among the wickets as well. 14 wickets between the 2 of them. They will be vital against the likes of Tejas and Sukhpreet. Of course they will be because, and what we've also seen is that when you see the approach of how Dubai take it, they bring in Harbhajan earlier with the ball also, and sometimes in the last couple of games also with the bat. So his job out there is to, just get quick runs, give them a kind of start, and if they get it, then Manish to Mukesh to hey, wo to karenge hi. Then, of course, we talk about some of the most interesting players out here, some who have had a good story, some have had a very motivating story. Talking about the motivating story, there is one man from the London Rhinos, the captain, Sukhpreet Singh. Well, he is somebody
when the team is down, he can actually give a very good pep talk and take the spirits of the team high. We'll have a look at what Sukhpreet had to say. मेरा नाम सुखप्रीत सिंह है, मैं लुधियाना पंजाब का रहने वाला हूँ। वर्किंग मैं एक हॉस्पिटल में एज अ प्राइवेट हॉस्पिटल में एज अ आईटी हेड काम करता हूँ। और अगर रियल क्रिकेट की जर्नी की बात की जाए तो मैं 2018 से 19 से खेल रहा हूँ। तो इसको स्टार्ट करने का ये रीज़न था कि मैं पहले अब कॉलेज के लिए खेलता था, स्कूल के लिए खेला हूँ क्रिकेट। तो जब जॉब स्टार्ट होगी तो वो मेरी क्रिकेट छूट गई मेरे से, तो जॉब की वजह से वो टाइम नहीं मिलता था खेलने का। तो एक दिन इसकी ऐड देखी गेम की, तो इसमें रियल वाले एक्शन थे, तो वो फीलिंग आई इस गेम को देख के कि रियलिस्टिक गेम लग रही है। तो इसको इंस्टॉल किया, इसको खेलना स्टार्ट किया, तो और अपने इसमें दोस्त बने, उनके साथ मल्टीप्लेयर खेलना स्टार्ट किया, तो ऐसे फीलिंग आने लगी जैसे हम खुद ग्राउंड पे जाके खेल रहे हैं। तो इस गेम में मेरे एक भाइयों जैसे दोस्त बने, सुरजीत सिंह, दविंदर सिंह, वो तो मेरे घर के भी बिल्कुल पास रहता है, डेली मिलना जुलना है उससे। तो साजनप्रीत सिंह, मुकेश मोस्टली टूर्नामेंट्स में मेरा पार्टनर एज ए पार्टनर खेला है। लोकल टूर्नामेंट्स हमने काफ़ी जीते हैं, मैंने और मुकेश ने। और ऑफिशियल की बात की जाए तो आरसीसी का जो फर्स्ट ऑफिशियल टूर्नामेंट हुआ था उसमें मैं रनर अप रहा था, तो उसमें 5 लाख के अराउंड अमाउंट जीता था। जैसे फाइनेंशियल भी मेरी बहुत हेल्प हुई उससे, मैंने अपनी स्टडी भी कंप्लीट की इस गेम की वजह से। अभी जीपीएल में जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, सुरजीत, मुकेश, साजन और दविंदर, ये सभी हम अलग अलग टीम्स में हैं। तो एज ए टीम पहले खेले हुए हैं सब हम, अभी एज ए ओपोनेंट भी खेल रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। एक अलग सब माहौल है और सब टीम अच्छा भी कर रही है और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर बात की जाए मेरी टीम लंदन राइनोस की, तो इस टीम में जब ड्राफ्ट हुआ था तो इस टीम में मैं सिलेक्ट हुआ, तो मैं किसी को जानता नहीं था। एक परवीन आहिर करके है, उसके साथ खेला हूँ, बाकी चारों को इतना मैं जानता नहीं था पहले। तो और जैसे ही हमारे ये जर्नी स्टार्ट होने लगी, तो एक दिन पहले जो हमारा मेन प्लेयर था, सेकंड टायर का प्लेयर, उसका मैसेज आया कि उसको कोई जॉब की वजह से इशू है, वो जो नहीं आ रहा टूर्नामेंट में। तो हमें एंड मोमेंट पे रिप्लेसमेंट लेनी पड़ी एक प्लेयर की। तो उस वजह से हमारे स्टार्टिंग के मैचेस भी कुछ थोड़े अच्छे नहीं गए, क्योंकि थोड़ा हमें एक दूसरे में घुलने मिलने में और एक स्ट्रेटजी बनाने में टाइम लगा थोड़ा। तो 2-3 मैच हमारे पहले वो ख़राब गए, लेकिन उसके बाद हमारा एक मोमेंटम बना और हमने अच्छा किया। और अभी 13 मैच के बाद हम अभी टेबल के टॉप पर हैं। और अंत में थैंक यू करना चाहता हूँ अपने मैनेजर्स का। जब हम बॉटम पे थे, वहाँ से लेकर टॉप तक की जर्नी में उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, हमें बहुत मोटिवेट किया। और एंड में एंटायर टीम जीपीएल का थैंक यू करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें क्रिकेट के प्लेयर्स को, ई स्पोर्ट्स के प्लेयर को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू। तो ये थे कप्तान लंदन राइनोस के सुखप्रीत सिंह, और इनके बारे में हम क्या बताएं आपको। इन्होंने मैन ऑफ द मैच जीते हैं पिछले 3 में से 2 मुकाबलों में। ही इज़ अ मोटिवेशनल फिगर, ही इज़ एन इंस्पिरेशनल लीडर, एंड ही इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल इन लंदन राइनोस क्वेस्ट फॉर द नॉकआउट्स। The mania's here. Maniacs wanted. And let's also take a look at the players to watch out for in the current scenario, and it's going to be a captaincy battle. Captain versus captain. Sukhpreet versus Mukesh. Abhi hamare viewers ne Sukhpreet ki kahani jani, but look, you know, these two have been inspirational for both their sides. Is it just about stats today? Is it just about the numbers today? Or is it also going to be about how much they can inspire their troops? I think it's more important for me than the fact of the stats, that the intent out there. They know they have to go 100%. There is no second chance. There is no looking back right now. So the stats are going to follow if the intent is right. I mean, if they're going out there with a good intent and a good intuition, saying that, look, we have been performing well so far. Both teams, of course. This is our game. We are going to go with a 100% kill margin out there. 192 runs for Sukhpreet, 203 runs for Mukesh, but also 14 wickets for Mukesh and 8 wickets for Sukhpreet. कह सकते हैं आज कि जो भी कप्तान इस बैटल को जीतेगा, शायद वो अपनी टीम को विजय की तरफ ले जाएगा। ज़रूर हमें देखना होगा कि अगर ये कामयाब होते हैं। द क्वेश्चन इज ऑलवेज दिस, बिकॉज यू नो समटाइम्स अंडर दीज प्रेशर सिचुएशंस हमने देखा है कि नए सितारे उभर आते हैं जी। और अगर ऐसे सिचुएशन में समझो, अगर दुबई ऐसे वो चाहेंगे नहीं कि मनीष और मुकेश जल्दी आउट हो जाए या फिर उनको नहीं मिल पाए विकेट्स, बट अगर इनमें कोई नया सितारा जग जाता है, जैसे हमने देखा था पिछले बार अंकित आए थे, तो आई थिंक दुबई can be close in that situation as well. हमने प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर तो देख लिए, लेकिन बाकी की बैटल के बारे में क्या कहेंगे आप? बिकॉज यू हैव एक साइड पे तेजस हैं, एक साइड पे रॉय हैं, आपने उनका नाम लिया, हम मनीष की बात कर चुके हैं, हमने शिवम की बात की, प्रवीण की बात की, वो भी ऑलराउंडर रहे हैं। हाउ आर दीज सपोर्ट प्लेयर रोल्स, हाउ इंपॉर्टेंट आर दोज? See, it becomes important for a fact that
when you're playing, earlier when they started, remember, it was a 1v1. Just to remind everybody, when we were in the registration phases, they were playing 1v1. Here they combine as a team. Now, of course, 10 days have gone by. I mean, they have been living together, bonding pretty well. So what happens is, it's not just that support on the ground, okay, but it's also support off field. You've seen somebody like a Chhatrapati who's been so instrumental in pulling the morale of the team up. So similarly, I also feel, apart from what they're going to do there, of course they will have to support. There is no other option, to be very honest. But what happens is, if you combine well, if you give them a total support in the setting that they sit in, I think on the given day, if you come out all guns blazing, the match is yours. Are you ready? Feeling Yeah, nervous? of course. Bit of nerves here, bit of goosebumps here. This is going to be a very, very important game, very crucial for the knockouts. We're ready for the toss with the two captains. डे 11 क्वालिफिकेशन डे का पहला मैच खत्म हो चुका है जहां पे एप्स जीत के जा चुकी है. They've taken the point and climbed the ladder in the overall standings. वैसे एक सिनारियो यहाँ पे मैच 2 पे होने वाला है where these two teams are fighting for none other than that extra 2 points जहां पे अपना क्वालिफिकेशन कंफर्म कर सकते हैं. Let's bring out those teams. एक और रहने वाले हैं London Rhinos, and on the other end we are going to be having Dubai Vipers. Give them a big round of applause. I came from the bottom and we winning. Sunday in the competition nahi. We came from the bottom and we winning. There ain't no competition. कोई नहीं मुकाबला. From the bottom निकला top डाला पैसा तो मुनाफा माँ पे गाली सीधा लाफा. और रैप द नाका सुनते बांग्ला मुझे थाका मैं. 5 स्टार के कपड़े पहन के खाता मैं हूँ धाबे पे. Streams हो या dreams अब पूरा कामयाब मैं. कोहली वाला mindset और धोनी जैसा शाप मैं. हर पब में जी और गेम है मेरे हाथ में. हंसता सीधा बैंक तक 50 वाले लाफ में. हा 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 हा. भाई तू है वीक और मैं लेता हफ्ता. खुद के तेरे हाथ नहीं तूने. All new Pulsar Mania's here. Maniacs wanted. Piyush, hey, I was just on Lenskart. ये जो price है $999, right? नहीं करण रुपीज है. I can't be seen wearing glasses under 1 lakh. Price थोड़ा ज़्यादा हो सकता है क्या? करण ये बढ़िया प्राइस है. इट्स ओनली बिकॉज वी डोंट हैव मिडिलमैन. 90,000? आप कहीं और से ले लो. 80,000. आई एम गोइंग बाय. अमीरों की हाई लगेगी तुझे. फैक्ट्री वाले प्राइसेस, नो मिडलमैन. लेंसकार्ट, डाउनलोड द ऐप. लेकिन ये पाइप चलेगा. फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं. कैप्टन्स को बुलाने से पहले यहाँ पे जो हमारे दर्शक, उन सबको मैं आगे आने के लिए बोलूंगा. उनके मैनेजर्स को स्पेशली आगे आने के लिए बोलूंगा. सब यहाँ पे आगे खड़े रहिए बिकॉज दिस मैच इज सुपर क्रूशियल. हर एक टीम जो यहाँ पे बैठी है अपने अपने डगआउट्स में, आप भी आगे आ जाइए बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी एक्सिलरेटिंग मैच एंड आपका सपोर्ट इन दोनों टीम्स के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रहेगा. सो लेट्स ब्रिंग आउट द कैप्टन्स एज यू गाइस कम अहेड. एक और से सुखप्रीत फ्रॉम द साइड ऑफ लंडन राइनोस एंड मुकेश फ्रॉम द साइड ऑफ दुबई वाइपर्स. साथ ही में हमारे अंपायर साहब को बुलाएंगे. अंपायर साहब, वी आर रेडी फॉर द टॉस. इफ वी कैन हैव यू ऑन द स्टेज. एंड ये देखिए, एक बहुत क्रूशियल डिसीजन मैच है. और अंपायर इज हियर. गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. अंपायर, टॉस कॉलने का टाइम. Toss will be called by London Rhinos. Head. Head is the call. Tails is the toss. यहाँ पे Dubai Vipers toss जीतती हुई. What would you choose first? Ball first. Ball first. Yeah. Okay, Dubai Vipers with bowling first. But मैं आपसे बात कर रहा था before we started the toss. आपने बोला कि यहाँ पे आने के बाद अब इस लास्ट मैच में फील हो रहा है कि प्लेयर्स के ऊपर क्या गुजरता है. आप लोगों के ऊपर क्या चल रहा है अभी? नॉकआउट मैच है तो सबको फील कैसा लगता है? अंदर से बहुत धक-धक सब मतलब कुछ. वेट भी नहीं, जल्दी हो जाए मैच ऐसा लग रहा है. खत्म हो जाए, रिजल्ट हमारे तरफ आ जाए, वही चल रहा है दिमाग में. ओके, सो व्हाट इज द बॉलिंग स्ट्रेटजी गोइंग टू बी? क्योंकि आपको पता है इनके साइड पे भी दोनों बेहतरीन है, बॉलिंग एज वेल एज बैटिंग. सी वैसे नॉकआउट, वैसे नॉर्मल मैचेस में ना 60-65 जा रहा था. ये काइंड ऑफ डू और डाई मैच है. 55 भी इजी ना होगा. अपन ट्राई 50 में रोक दें और चेस कर लें. लेट्स सी इफ इट हैपेंस. कैन आई हियर इट फॉर दुबई वाइपर्स हियर? चलेंगे सुखप्रीत पाजी. उन्होंने बॉलिंग का फर्स्ट डिसीजन लिया, तो आपको अभी बैटिंग फर्स्ट करना पड़ेगा. सो हाउ इज इट गोइंग टू बी?
सर बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच है। Yes. लूजर ऑफ द मैच इस टूर्नामेंट से बाहर भी हो सकता है और जो विनर है वो टॉप 2 में फिनिश करेगा। तो ये जो पिछले 2 वीक्स की मेहनत है, प्रैक्टिस है, वो सब इस मैच पे डिपेंड करती है। और एक प्रेशर मैच में अगर आप अच्छा रन स्कोर बोर्ड पे स्कोर लगा देते हो तो वो इजी भी नहीं होता चेज करना। तो कोई टॉस की तरह मैटर नहीं करता, जो भी अच्छा खेलेगा वो जीतेगा सर। Wow, spoken like a true sportsman. टॉस मैटर नहीं करता, हम खेल के दिखाएंगे, तो खेल के दिखाइए। यू कैन शेक योर हैंड्स एज वी स्टार्ट द गेम बिटवीन लंदन राइनोस एंड दुबई वाइपर्स। क्वालिफिकेशन गेम रहने वाला है। बट बिफोर आई सेंड इट टू आवर एनालिस्ट, एक बार क्या मैं दुबई वाइपर्स के लिए एक चीख सुन सकता हूं? लग रहा है थोड़ा यहाँ पे नीचे है। उन राज भाई आएंगे फॉर द साइड ऑफ लंदन राइनोस। तैयारी तो है, गेम के अंदर जाएंगे, बट उससे पहले चेतन एंड रोशन ऑन द एनालिस्ट डेस्क, टेक इट अवे। There you have it, Dubai winning the toss and opting to bowl first. Roshan, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का आज। बिल्कुल रिस्क लेने का ही नहीं बाबा. But the point is that, you know, even yesterday we did see that when they came out against Kolkata, they won the toss and choose to bowl, which is pretty much like I mentioned, textbook style. They're not going to take. But what's more important, they came out pretty well against Kolkata, so they're going to follow the same formula today as well. Yeah, I mean, it's not a guarantee that you're going to bowl first and you're going to win the game, but it's just a bit of a comfort zone. Like I said earlier, 97% teams winning the toss in this tournament have opted to bowl first. Right then, we are ready for the game, and let's go to our casters, Crips and Floki, all ready. Over to you. All new Pulsar Mania is here. Maniacs wanted. लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, देवी और सज्जन और हमारे सारे दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है ग्लोबल ई क्रिकेट प्रीमियर लीग में। हम दिन के दूसरे मैच पे आ चुके हैं जो खेला जाएगा दुबई वाइपर्स और लंदन राइनोस के बीच में। मैं हूं फ्लोकी, मेरे साथ है क्रिप्स। क्रिप्स, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस गेम? Honestly, I do not know, man. I just know कि ये गेम दोनों टीम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि टीम्स जिस तरह से खेल रही थी वैसे ही खेलेंगी। आई होप कि ये लास्ट मिनट पे कोई एक्सपेरिमेंट्स ना हो। आई गेस द मैक्स दैट दे विल डू इज प्रॉब्ली चेंज देयर बैटिंग एंड बॉलिंग ऑर्डर, व्हिच इज फाइन। यार लेकिन दुबई और लंदन दोनों के दोनों टीम्स जो है वो ऐसे मुकाम पे थे एक पॉइंट पे कि वो टॉप पे थे। नाउ बोथ ऑफ देम जस्ट नीड टू गेट देयर। Yeah, I mean, a very, very crucial match for both of these teams over here. A lot on the stake, a lot on the line. And I think it's going to be a close one because both sides are kind of like fire versus ice, right? You've got the prolific bowlers going up against the prolific batsmen. But you don't have to worry about that, folks, because we are getting ready to rumble! Praveen and Teja's going to be opening things out here for the side of the London Rhinos. What a beautiful four to start things off with. I don't know anything about rumbling, but that definitely was a fumble from the end of Harbhajan. Could have been a nice straight ball, but nope. It just had to be tossed to the boundary. Oh yeah. He's going to be regretting that, but let's see for how long, because there's still a chance he gets a dot or a wicket. Something of the sort. Oh, ooh. Attempt at run out, but no appeal. The keeper knew. He saw the batsman. He was safe. That was quite close. 4 balls remaining now. As Harbhajan eyeing the middle stump. No cigar. Tight fielding coming out from Dubai though. And again, the Dubai Vipers. This is similar to what they used to do. They used to play a little bit risky. But yeah. Yeah, that
is something you can't repeat. Not when there's so much at stake. So interestingly enough, our analyst pointed out before this game began कि लंदन को अगर ये गेम जीतना है तो उनको 20 रन के मार्जिन से जीतना पड़ेगा. Now that seems very difficult against Dubai Vipers. Oh yeah. I mean, if they don't win it with a 20-run margin, they are still there. They can still qualify. But this one's a 4, and I think they can build up that deficit quite well. Oh yeah, this is what you need in the power play overs. Boundaries coming through here for the London Rhinos. And this is the kind of strong start you need if you're going to qualify and if you're going to win. So if they win, I think they still have a chance of qualifying well enough. But if they want to get to the absolute top of the table, they need to win with a margin of more than 20 runs. Oh! Oh no! The catch just drops. The Dubai Vipers. That is going to be costly. Definitely, man. I almost thought they had this one. I mean, at the start of the tournament, हम लोग को ऐसा लगता नहीं था कि backward dive वाले catches possible है, लेकिन उसके बाद हर कोई वो catch करने लगा. And then we thought कि यार अगर ball इस area में आ जाता है तो मतलब wicket confirm है, but this was just a little too close. Yeah, and this is not going to be riding on your head now. It's going to be riding on your head in those last overs. Yeah, तब जाके regret होएगा आपको. बिल्कुल. But इसी के साथ London Rhinos भी उनको भी comment करना पड़ेगा. काफी शानदार batting. पहले ओवर में. Oh, you can hear the cheers coming through here for the London Rhinos. Beautiful batting. Tejas, very characteristic of him to go for those lofted shots and find success. What a shot was that? वो shot इतना powerful था कि stadium में बैठे जितने भी लोग हैं और वो सब भी चिल्लाने लगे. Oh yeah. Oh, but this time around it's got Tejas has been taken out on his second ball here. And Richard adjusting his spectacles. As if he was an anime protagonist. Oh yeah. Tejas, man, he's been one of the most consistent batsmen and the most dangerous ones. लेकिन last 2 games में उनका बल्ला इतने भारी तरीके से नहीं चला है जितना हम used to है. बिल्कुल, उन्होंने वो गति नहीं पकड़ी है जो पहले पकड़ा करते थे. Initial games में लंदन राइनोज काफी खतरनाक ओपोनेंट्स हुआ करते थे क्योंकि तेजस बहुत ही शानदार बैट्समैन थे, लेकिन जैसा कि आपने कहा पिछले थोड़े गेम से बस वो वैसे परफॉर्म नहीं कर पाए. लेकिन फिर भी लंदन राइनोज के पास बहुत अच्छा चांस है गेम जीतने का. Exactly, और not just that, उनकी पेस भी काफी अच्छी चल रही है. 1.5 overs में अगर आप 20 रन का मार्क जो है वो क्रॉस कर चुके हो, मतलब that's a very good thing. हाँ, आपने विकेट गवाया लेकिन आपको बाउंड्रीज भी मिल रहे हैं. आपका रन रेट 14.67 है, ऑलमोस्ट 15 का रन रेट है, वो भी पावर प्ले के अंदर. तो आई थिंक लंदन ये मेंटेन कर सकता है आराम से. बिल्कुल, ये मेंटेन करना काफी जरूरी रहेगा क्योंकि दुबई वाइपर्स अग्रेसिव बॉलर्स हैं. वो कोशिश करते हैं विकेट्स लेने की, लेकिन देखते हैं इस बार वो ले पाएंगे वो विकेट्स की नहीं. दुबई वाइपर्स आपस से अच्छा फील्डिंग करते हुए बाउंड्री प्रिवेंट करेंगे. और सिर्फ वो एक चौके के अलावा विजय ने एक भी बाउंड्री नहीं दी अभी तक. आखिरी बॉल देखते हैं कि वो बदलता है या नहीं. प्रवीण यूजुअली इतना नहीं मार पाते, लेकिन आज तो वो बहुत ही अच्छे बल्ले चला रहे हैं. काफी सारे शॉट्स उनके रिस्ट फ्लिक रीडायरेक्ट्स थे टुवर्ड्स द पॉइंट साइड. नो सॉरी, फॉर हिम इट्स स्क्वायर लेग, यू नो, बिकॉज़ ही इज लेफ्ट हैंडेड एंड व्हाट नॉट. बट स्टिल in a game where Tejas doesn't perform, everyone else will step up. London का सबसे बड़ा खासियत, सबसे बड़ा strength वही है. Every single one of their players is capable of stepping up and solo carrying the team to victory. बिल्कुल, हमने सागर अमित को बॉलिंग करते हुए देखा है. बहुत ही शानदार बॉलिंग करते हैं. प्रवीण और सुखप्रीत की बैटिंग भी बहुत अच्छी है. I mean, सारे प्लेयर्स जैसे कि आपने कहा लंदन राइनोज में सबके पास वो पोटेंशियल है गेम अपने आप उठाने का. लेकिन हाँ, जो कोऑर्डिनेशन था उनमें वो बस अभी थोड़े दिनों से, पिछले कुछ गेमों से आया है यहाँ पे. उसके पहले वो थोड़ा सा इंडिविजुअलिस्टिक खेल रहे थे. या सो नाउ वी नो कि उनके पास इंडिविजुअल प्रावस है, मैकेनिकल स्किल्स है. एंड नाउ जिस तरह से उनका टीम वर्क अच्छा हो रहा है, दे कैन फॉर्म अप स्ट्रेटजीज दैट वे. बिल्कुल, दे कैन प्ले मोर टुगेदर एज अ यूनिट इंस्टेड ऑफ 5 or 6 different individuals. And again, 5 fingers in a fist is what makes a punch powerful, not each finger by itself.
Oh. That is also what makes a team powerful. Now I see why you were leaning so heavily into the whole WWE and boxing philosophy. Start with a rumble, then go to the punch references. What are you going to teach us, how to kickbox later? No, I believe Andrew Tate knows that better. Oh my goodness, I did not want to hear that name today, but yep. There are other ways to learn kickboxing. Boycott. I was going to say there's other ways to get rich. That is by winning GEPL. 2.5 crores ka prize pool hai. Certainly. But halfway through here in the first innings, and the London Rhinos are not doing all that bad considering their opponents. Ooh, and again, dive to cover that. Second time around here that they almost found a run out. Now I know कि जो भी दर्शक ये देख रहे हैं वो बाकी प्लेयर्स के अलावा इतना कुछ नहीं देख पा रहे, लेकिन यहाँ पे एक लिटरल कंपटीशन चल रहा है ऑफ द स्टेज एज वेल. London के supporters versus Dubai के supporters, they're just trying to be louder than the other side, and I love it. I love this energy. Oh man, there is so much at stake here. Oh, but it's not caught by the fielder. Only the boundary is protected, and that's enough. Vamsi, he has been a terrific bowler, a terrific batsman. He's delivered on all fronts for the side of the Dubai Vipers, but today he's going to need that little edge, that little extra. He wants to try and win this one. Yeah, but I guess we won't be seeing any explosive performances from Vamsi today. Still, he does a damn good job of limiting their runs, just keeping them to, what, 13 in an over? That's very, very humble. Yeah, it certainly is. Especially when the London Rhinos are bringing out their top order batsmen right now. To keep them humble, to keep them grounded, means it's good. And हमने पहले भी कहा था, लंदन राइनोज अगर 20 के डेफिसिट से 20 रन के मार्जिन से जीते तो वो टॉप ऑफ द टेबल जा सकते हैं. क्वालिफिकेशन का वैसे भी मुमकिन है, लेकिन given how tough this competition is getting, that #1 spot will definitely help you a lot. Oh, that shot is high, but again, the field are close enough to capitalize on it. And only 2 will be given. Manish, also another player for the Vipers who's been stellar on both fronts, batting and bowling, but today, you must deliver. Otherwise, there are no second chances. Otherwise, you leave your fate in the hands of the other teams. Ooh, that's a dangerous shot, but he's found the gap. Bro, जैसे ही वो बॉल हवा में गया, मुझे लगा कि यहाँ पे विकेट जाएगा. Wonderful cover drive, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हमने बहुत बार ऐसा देखा है, cover drives can be dangerous. आप अगर यही शॉट को 2 या 3 बार अटेम्प्ट करोगे, कभी ना कभी तो आपका कैच आउट डेफिनेटली होने वाला है. बिल्कुल, I mean, एक कह सकते हैं कि एक बेट है ये. काफी बार हमने देखा है बैट्समैन को उस तरफ मारते हुए. वापस से सेम शॉट, सेम डायरेक्शन, सेम जगह, और लंदन राइनोज आपस में एक दूसरे को तालियां देते हुए यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं. Bro, but they are flirting with danger, man. They are really flirting with danger over here. कवर ड्राइव्स 1-2 बार अच्छे लगते हैं पूरे टूर्नामेंट में, पूरे मैच में एक्चुअली, नॉट टूर्नामेंट के हिसाब से, लेकिन हमने बहुत बार काफ़ी प्लेयर्स को आउट होते हुए देखा है. चेन्नई के बहुत सारे प्लेयर्स, कोलकाता के बहुत सारे प्लेयर्स यही अटेम्प्ट करते करते गए हैं, और इस बार एक और फील्डर लगाया गया है उसी तरफ, जस्ट टू मेक श्योर कि वो वापस से कवर ड्राइव ना मार पाए. लेकिन दिस टाइम ही गोस फॉर अ स्क्वायर कट, एंड इट्स जस्ट अनदर 2. I mean, really good batting coming out here from the London Rhinos today. They take off all restraints and they play the way they want to. They've incorporated those lessons they've learned over the past couple of days here and are really giving it their all. 55 runs found here with 1 ball remaining to go in the second last over. A really good chance for the London Rhinos to set an ambitious target. Yeah. They had the 14.3 run rate in the power play and they've maintained it all throughout. हर ओवर में 1 या 2 बाउंड्री लगा के बाकी सारे बॉल्स पे डबल ले रहे हो. बहुत ही कम डॉट बॉल्स आए हैं. विकेट भी सिर्फ एक ही गवाया है.
तो वो हिसाब से लंदन राइनोस बहुत अच्छी तरीके से खेल रहे हैं। 60 तो वो आराम से क्रॉस कर सकते हैं। देयर इज अ चांस अगर वो और बाउंड्रीज मार दे कि 70 का टारगेट लग जाए, और अगर ये 70 के ऊपर चले आता है तब दुबई वाइपर्स को अपने फुल आफ्टर बर्नर्स लगा के खेलना पड़ेगा, फुल स्पीड पे खेलना पड़ेगा। दुबई एक ऐसी टीम है जो 70 का टारगेट चेस कर सकती है, लेकिन क्या वो हर बार कर पाएंगे, क्या वो आज कर पाएंगे, वो देखना बाकी है। अब आते हैं कैप्टन मुकेश बॉल करने के लिए। प्रवीण काफी कंसिस्टेंटली खेल रहे हैं, यू नो। बिल्कुल, और वापस से मैं कहना चाहूंगा कि फील्डिंग भी काफी अच्छी है यहाँ पे दुबई वाइपर्स की तरफ से। बार बार कोशिश नहीं कर रहे कि वो अच्छे टाइमिंग की वजह से वो छोटे से ग्रीन बार पे फील्ड करके शायद एक विकेट ले ले। नहीं, वो कोशिश कर रहे हैं कि जहां तक हो सके बस फील्डिंग टाइट हो, 2-2 करके ही रन्स देते रहे, और बाकी का काम वो दूसरे इनिंग में कर सकते हैं। आत्मविश्वास की कमी नहीं है यहाँ पे दुबई वाइपर्स में। आत्मविश्वास और टैलेंट दोनों की कमी नहीं है। केवल 4 बॉल बाकी है अभी। मुकेश अभी तक सिर्फ 2-2 ही रन्स देते आए हैं। बस कोशिश कर रहे हैं कि 70 से ज्यादा रन्स नहीं बनाए यहाँ पे लंदन राइनोस, वरना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे दुबई वाइपर्स के लिए। You know what the cool part is, Floki? Up until yesterday, हम मिर्दा जी और नीप की तारीफ कर रहे थे because they are leading wicket takers. But I just realized that Mukesh yesterday became the highest wicket taker in the tournament. दुबई के कप्तान मुकेश के पास फिलहाल 14 विकेट्स है। Can he get his 15th before this match ends? Maybe. Maybe. Remains to be seen, but I think what we're more curious about is if the Rhinos can cross 70. Yeah, if Mukesh can really limit the damage, or if the Rhinos are going to touch 70. It's a tall order. It's a rough spot to be in if you're the Vipers, especially if you're Mukesh, but I think he's familiar with these situations. He's been in these shoes before. This isn't his first rodeo. And he's done well before as well. Yeah. He's proved why he is capable of being the captain on one of the leading teams in the GEPL. Be the leading wicket taker as well off the league stage. And even though he limits the damage, I guess he won't be extending his record any further. Unless the last ball has a surprise for us. Oh, yeah. 42 runs scored off of 19 balls. Praveen has been performing really well here. Single-handedly kept his team afloat. And oh, it's a good shot. What a way to end this one for the London Rhinos. The first innings, they end with a 4, and the target is 72. The target is 72. The London Rhinos score 71 for just one loss. Stellar batting from the side of the Rhinos. And now the Dubai Vipers, they have to bring their A game. They need to put their best foot forward. हमने पहले भी दुबई वाइपर्स को 70 का टारगेट क्रॉस करते हुए देखा है। All new Pulsar Manias here. Maniacs wanted. Lenskart. Download the app now. लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। It's time for Roy to step up. Roy एक ऐसे बैट्समैन है, very similar to तेजस। वो भी स्टार्टिंग के बॉल्स में बहुत ज्यादा पेस पकड़ लेते हैं, बाउंड्रीज पे बाउंड्रीज मारे जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो जल्दी आउट हो जाते हैं। But that's his role, you know. By the time he's out, वो already 20-30 रन बना चुके रहते हैं। Yep. But the funny part is both Tejas and Roy have been having terrible games in the last few days. Ooh. And one more thing I'd like to remind you of is that the London Rhinos, they not only need to win, but they need to win by a certain margin of runs. I believe it is 20. That is if they want to go for the top spot. Exactly right. हाँ, आप qualify तो कर ही सकते हो, लेकिन अगर आप top spot पे चले गए, अगर आप top 2 में आ गए, तो आपको finals के अंदर एक better seed मिलेगा और आपको वहाँ पे एक advantage मिल सकता है। Yeah.
Ankit Roy. A little bit off kilter here. Unable to focus. But will finally connect on the third ball of the power play over. Oh, but an unnecessary dive. Room for a 3 here. And the Dubai Vipers do leg it. Well, so far, Amit has kept them humble. 2 dot balls is very, very impressive, especially when you're up against someone like Roy. Like enough, Mukesh, the captain, is here. And Mukesh has a very different batting style from his counterpart. Oh, okay. Straight towards third man. But again, received quickly by the fielder. Oh, and the London Rhinos, they are playing this one tight, man. 4 runs given in 4 balls in the power play over. They know what they need to do. But the question is, can the Dubai Vipers stop them before they get there? Great shot. Right between the 2 players on mid-wicket. बहुत ही अच्छे से उन्होंने momentum redirect किया ball का. And that's on a powerful pulsar 4. Much needed one of that too. After those 2 dot balls, 4 like that, it reinvigorates your spirit. Last ball here in the first power play over. Ooh. Another boundary attempted, but the fielder is there. Dives and stops it. And there is room for a third. Decent recovery from the London Rhinos. 11 का target cross करते हुए पहले over में. Not the ideal power play performance, but hey, at least they limit the damage. At least उन्हें कोई wicket नहीं खोया. उनका brute batsman अभी भी crease पे है. So I think this can work. Oh yeah. I mean, start थोड़ा सा slow था यहाँ पे दुबई वाइपर्स के लिए, लेकिन धीरे-धीरे करके वो आगे बढ़ सकते हैं. लेकिन जी हाँ, उनको काफी फोकस के साथ खेलना पड़ेगा यहाँ पे. गलतियों के लिए ज्यादा मार्जिन नहीं है. बिल्कुल भी नहीं. और अभी सागर की गेंदबाजी से निपटना पड़ेगा इन्हें. ओह, और बहुत ही शानदार शॉट रॉय. बहुत ही अच्छे बल्लेबाजी करते हुए सबसे पहली गेंद पे सागर के सामने एक चौका उठाते हुए. आपने कहा था कि उन्हें सागर से निपटना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो सागर पिट रहे हैं. नो, सागर का मुंह तोड़ जवाब. सेम शॉट अटेम्प्ट किया वही डायरेक्शन में, फाइन लेग की तरफ एक बार फिर से लॉक करने का अटेम्प्ट, लेकिन सागर ने कहा हाउ डेयर यू हिट अ बाउंड्री ऑन माय फर्स्ट बॉल, एंड ही टेक्स रिवेंज. Beautiful. Sagar finding that wicket, taking out the brute batsman, and now it's Mukesh and Manish on the pitch. Vamsi is the radical, he's been safe for later. And Manish, the more consistent, balanced batsman, is out to play. Okay, and that's another good shot. Off to the boundary for a 4. That ball's not coming back. But neither is Ankit Roy. Unfortunately, yeah. Hey, but at least वो हिसाब से ये दोनों teams अपने brute batsman को बहुत जल्दी खो चुकी है without gaining much. So that's a recurring trend for both these teams. But man, oh man, these captains are stepping up. Back-to-back boundaries. Another 4 conceded here. And sure, you might have found a wicket, but can you get the captain's wicket? मुकेश टिके रहेंगे, वहीं पे टिके रहेंगे. His eyes locked onto the phone with intensity, ferocity as well to some extent, and he goes for the reverse sweep. Dangerous. Yeah. A little bit too late on the sweep, and it catches him in the elbow. Sagar finding some respite with that dot ball. Gets another one, it could work wonders, but I don't think he has. Another 4 here for the Dubai Vipers. 16 runs found in the second power play over to even up the playing field. 27 runs found at the end of those 2, and given the way it started, the Dubai Vipers have certainly recovered. Oh, they have recovered, but what still baffles me is the audacity. ये ओवर का रिकैप करते हैं, ठीक है. पहले उनने एक बाउंड्री मारी फाइन लेग की तरफ, वही शॉट वापस अटेम्प्ट किया, विकेट चला गया. फिर बाद में मुकेश आते हैं और वो कहते हैं कि देखो हम ये शॉट बार-बार खेल सकते हैं, बार-बार ये शॉट रिपीट कर सकते हैं और तुम हमारी विकेट नहीं निकाल पाओगे. The last 2 boundaries, they used the exact same reverse sweep. एक बार मिस किया लेकिन दूसरी बार कनेक्ट किया. And the sheer audacity to go for the same type of shot again,
just proves how goddamn confident you are in your ability and your technique. Especially when Sagar found a wicket due to that same persistence that the Vipers showed a moment before. Oh yeah. Both of these teams going blow for blow. Fighting fire with fire, but now comes the real deadly part. Now that the power play overs are done for, how are you going to find those boundaries? Sheer grit and determination, Floki. And pure upper body strength. I mean, good timing with the thumb. There's no upper body involved over here except for your thumbs. Yeah. And again, some good bowling coming out here, really limiting the number of runs they can find, and putting the batsman in this spot is going to be quite problematic for the Dubai Vipers. They do not want to be, well, sitting at that same run rate for the next 2 overs, because again, that will put pressure in the last over, and that's when you'll have to start playing risky. That's when the bowler, if he's creative, he'll get your wickets. Yeah, Praveen can be creative enough. Not a lot of variation in terms of the ball length, but man, he kind of variates the off spin, leg spin quite often. But this one seems to be like wide, so एक extra run मिलेगा यहाँ पे Vipers को. But Praveen is not going to sweat it too much. अभी भी काफी ज़्यादा gap है उनके बीच में और target के बीच में. Yeah, and these wides, I mean, it might seem like they're not all that big, but they make a huge difference. Just like Praveen did with that beautiful ball. Another wicket here for the London Rhinos. बहुत ही dangerous shot था ये. The fact that you attempt a long off shot, especially ऐसे short ball में, जब आपका elevation बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ही ज़्यादा risk ले रहे हो catch out होने का, और वही पछतावा हुआ अभी मनीष को. Oh yeah. But again, it now means that Mukesh and Vamsi are on the pitch, the 2 radical batsmen, so perhaps there's more hope now than before. Maybe this is a blessing in disguise. But again, those kind of mental gymnastics are easier to play if you're sitting on the casting desk, not when you're out there playing. Yeah, at that point your brain just freezes. There's so many options, so many permutations and combinations. You are spoilt for choice. Yeah. And that's when you start to overthink. वही moments पे आपको अपने दिमाग का clutter clear करना है और सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है, बॉल के trajectory पे. यहाँ पे वामसी का थर्ड मैन खुला छोड़ा है. देखते हैं कि वो वहाँ पे शॉट अटेम्प्ट करेंगे. कोशिश की लेकिन पॉइंट की तरफ जाता हुआ गेंद, और आई थिंक उन्होंने शायद एक ही रन लिया जानबूझ के ताकि मुकेश स्ट्राइकिंग एंड पे आ पाए. शिवम काफी शानदार बॉलर रह चुके हैं यहाँ पे, लेकिन देखते हैं कि वो वही फेरोसिटी के साथ वापस बोल कर सकते हैं कि नहीं. ओह ओके, कोशिश अच्छी थी यहाँ पे मुकेश की तरफ से, लेकिन फील्डर मौजूद थे और उसकी वजह से अभी वापस आएंगे वामसी स्ट्राइक पे सिर्फ एक रन मिलता हुआ. Exactly, man. उन लोग को एटलीस्ट 2-2 रन चाहिए था हर एक बॉल पे. And now that they're losing balls, now that there's like what 10 balls left, I think, उनको बाउंड्रीज मारना शुरू करना पड़ेगा. 31 runs to catch up. Yeah, he might even see a wicket here. Ooh, that could have been one had it not been for well, that shot selection. If it hit the leg, a good chance there would have been an LBW, but ना, लेकिन बॉल स्टंप के लाइन में इम्पैक्ट नहीं किया. Yeah. Oh, okay. और ये भी एक रिकरिंग ट्रेंड है शिवम का, वो कभी भी स्टंप को टारगेट नहीं करते. आउटसाइड की ऑफ स्टंप लाइन डाल रहे हैं ताकि वो एक ट्रैप बॉल सेट कर सके, और फिर ही इज होपिंग कि उनके मिड विकेट वाले जो फील्डर है वो बॉल को पकड़ ले. ओह हाँ, लेकिन काफी शानदार बॉलिंग कर चुके हैं यहाँ पे शिवम ऑलरेडी. सिर्फ एक रन देते हुए और यहाँ पे विकेट भी निकालते हुए वामसी की विकेट ली है यहाँ पे शिवम ने. बहुत ही शानदार गेंदबाजी, और लगता है लंदन राइनोस वो टॉप स्पॉट लेना चाहते हैं यहाँ पे GEPL में. सागर भी यहाँ पे मजे लेते हुए, और आप देख सकते हैं कि मुकेश, उनके चेहरे पे एक हल्की सी हंसी है. वो समझ रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, उन्हें किस तरह की गेंद या बल्लेबाजी करनी पड़ेगी यहाँ पे. Yeah, that's what you need to be scared of. When Mukesh starts to smile, even though he's got so much pressure on him, you know he's going to do something crazy. Well,
Certainly saving that crazy for later. Only running the one on purpose in order to retain strike. The captain says, place it all on me, the weight of the team and the world. Let me be the one. He has to turn into Hercules if he wants to carry that much weight, that much pressure bearing down on him. Spines crumble under that kind of pressure. Can Atlas rise here? He's certainly going to try. Good four coming through. 31 needed off of 6. Great shot selection. Off stump के outside वाले line पे अगर आप Yorker ball डाल रहे हो, every batsman's instincts will start screaming, this is a trap. But there's only one person who can persevere in the face of that trap and still get through it. It's none other than Mukesh himself. Run cancelled, run cancelled. They did not run between the wickets. Good decision too. Mukesh actually hoping that he can retain strikers. Now it's time to just go for these shots. He will need all sixes. Yeah. 6, 12, 18, 20. No, wait, even all sixes can't save him. You need a no ball or you need 3 wides, and well, that's a tall order. Shot not even attempted there by Mukesh. This game seems to be done and dusted, folks. And I guess London Rhinos will indeed qualify for the massive enough margin to climb to the #1 spot of the GEPL overall points table. Hold on, hold on. Is that going to be a wicket? Yes, it is. Mukesh has been taken off the pitch. That should about do it. Now the only thing that the Dubai Vipers are playing for is to make sure that the London Rhinos don't get that top spot. That's the only thing they can achieve now. If they can somehow get 8 runs, then the London Rhinos, well, they'll certainly win, but they won't be too happy about the way that victory came. But that should about do it. They limit the damage. Yeah, unless Crips, they get a 6. That is the only saving grace here for the Dubai Vipers. Last ball for the second innings, last ball for the match. Shree to deliver it. Can he do it? Can he conserve that margin? Can he get them that top spot? High up in the air. Oh, and it's a 6. Oh no, the London Rhinos, they will take the win, but the top spot perhaps not. But regardless, a win is a win, and that's all they care about. A win is a massive win, and now they climb to 18 points. The Dubai Vipers chasing them hot on their heels, but they have a decent enough margin, and their run rate will certainly climb. It may not be the desired number you would have wanted, but there's still enough buffer. There's 3 more games remaining today. And can the London Rhinos retain their top spot even after winning with such a massive margin? We will find out on the other side of this break. Don't go anywhere. All new Pulsar Mania's here. Maniacs wanted. Lenskart. Download the app. लेकिन ये पाइप चलेगा। Finolex pipes. पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। This was not the battle only for the top spot, but also a battle between the managers of London Rhinos as well as Dubai Vipers. But such a wonderful game. Give both of these teams a big round of applause, guys. What a game that we have witnessed. But captains या टीम से इंटरेक्ट करने से पहले मैं इन दोनों टीम्स के मैनेजर्स को बुलाना चाहूँगा. If I could request Dubai Vipers as well as London Rhinos के मैनेजर स्टेज पे आ जाइए. आ जाइए. आज है ना, कल जब देख रहे थे राज भाई अकेले लड़ रहे थे एंड यहाँ पे पूरी टीम को चीयर कर रहे थे, एंड आज राज भाई को एक ओपोनेंट मिला. मैं आपसे ही शुरू करना चाहता हूँ, कैसे लगा इनके साथ मैनेजर वर्सेस मैनेजर लड़के, एंड ये भी हार नहीं मारे, आप उनसे जोर चिल्ला रहे थे फिर भी आपको टक्कर देने के लिए तैयार थे. सर दोस्ती अपनी जगह होती है और ऑब्वियसली ऑन फील्ड जहाँ हमें बैंटर वो सब टीम को पसंद आती है, और क्रेडिट देना चाहूँगा लंदन राइनोस को और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग बहुत डिजर्विंग टीम हो. और एट द एंड ऑफ द डे हम लोग
एक GPL के ब्रांच के अंडर में हैं, सो बहुत अच्छा गेम देखने मिला। सो उस चीज़ के लिए दाद देनी होगी दोनों टीम्स को। और बात आई सर रिजल्ट की, हम उतना फोकस नहीं करते हैं, बस टीम को सपोर्ट करते रहेंगे चाहे जो भी रिजल्ट हो। और मुझे अपने बॉयज़ पे बहुत भरोसा है, अगर हम 3rd या 4th भी फिनिश करें तो वी कैन गो एट द टॉप। वाओ, सच एनकरेजिंग वर्ड्स। आप ही आ जाइए, आप क्या बोलना चाहेंगे आपकी टीम के लिए? Well played. First of all, congratulations to London Rhinos. Really well played. They showed really matured gameplay, and we were here to give our best for the boys. They performed extremely well. One of the underdog teams. Nobody expected that they'll come so close, but we are not yet out. We'll just have to root for the other teams so that we can get 2 now. देखिए, आज का पूरा दिन है ना नेट रन रेट के खेल के ऊपर चल रहा है। क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। मुकेश, आप आ जाइए। कैप्टन साहब, जो इन्होंने कप्तानी दिखाई है, जो शिप को संभाला है आज, व्हाट अ ग्रेट शो। मतलब आखिर तक आप टिके रहे पिच पे, दैट्स इटसेल्फ टेक्स अ लॉट टू डू। जब विकेट्स गिर रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां मुकेश के लिए। दैट्स नॉट इजी टू डू। बट कैसे लग रहा था? आई नो दिस इज नॉट द रिजल्ट, बट जैसे आपके मैनेजर्स ने बोला, विल स्टिल वेट इट आउट वॉच। आज के दिन में आपको वेट आउट करके देखना पड़ेगा क्या होने वाला है। बट आई नो दिस इज नॉट द मैच, बट टीम को क्या बोलना चाहेंगे आप? See, first of all, congrats to Team London Rhinos for qualifying top 2 spot. And we are thanks to everybody who supported us, no matter what the result is after today. But thanks to everybody who all supported us, and special thanks to our managers. आई थिंक बाजी यहाँ पे GPL है, हमारे मैनेजर्स मार के गए हैं। बट चलेंगे हमारे विनिंग टीम की तरफ। पहली बार आप टक्कर देते हुए नजर आए राज भाई को, वरना तो अकेले दुबई वाइपर्स को जिता के भी दिखा रहे थे। बट हाउ डज दैट फील, दैट एनर्जी दैट यू हैड टू पंप थ्रू, जहाँ पे गेम सिर्फ प्लेयर्स के बीच में नहीं था बट कहीं ना कहीं ऑफ स्टेज भी था? हाँ, वो ज़रूर था। फर्स्ट ऑफ ऑल दुबई बहुत अच्छा खेली, सो कॉन्ग्रेट्स दुबई वाइपर्स। एंड हम 4 दिन पहले बॉटम ऑफ द टेबल थे, तो हमने ट्राई किया कि चलो यहाँ से आके सपोर्ट करते हैं, कुछ ना कुछ आउटकम मिलेगा। और यहाँ से सपोर्ट किया, फिर रियलाइज़ हुआ कि सबको लगता था कि लंदन राइनो लास्ट है, बट ये भूल गए कि राइनो है। जितना आगे जाएगा उतना ज़्यादा डैमेज करते रहेंगे ये लोग। वाह, सही बोला, एकदम सही। आपको क्या बोलना है आपकी टीम के बारे में? जब मेरे को टीम में पहले टीम मैनेजर रोल मिला था लंदन राइनोस का, तब इन लोग का ग्रुप में मैसेज पूरा इन लोग का प्रैक्टिस तब से देख के आ रहा हूँ मैं। तभी पता है कि मेरे को ये टीम पक्का आगे जाने वाला है, और आज प्रूव कर दिया ये लोग। सुखप्रीत इज़ द बेस्ट कैप्टन हियर, वो पूरा कैप्टन कूल है वो। फाइनल प्रीत उसका सही नाम है। आई अग्री। सुखप्रीत पाजी, आप आ जाइए स्टेज पे। सच में है ना, हम जैसे धोनी सबको देखते हैं, यहाँ का GPL का अगर कैप्टन कूले सुखप्रीत, ना सिर्फ अपने टीममेट्स का ध्यान रखते, यहाँ पे बाकी सारे टीममेट्स का ध्यान रखते, एंड सबको एक गेम के बाद बताते यार ये नहीं करना चाहिए था, अगले गेम में ये करो। ऐसे कभी नहीं देखा कि अरे यार जाने दो, पॉइंट गए। अगले बार पॉइंट जीतने के लिए हर वक्त टीम को प्रोत्साहित करते। अब जीत चुके हो, जो लैडर क्लाइम कर रहे थे टॉप में आ चुके हैं। कल के अंत में थोड़ा स्लिम चांस था कि बाहर हो सकता है, बट अभी 18 पॉइंट्स के साथ। सर, टॉस के टाइम बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, जो 2 वीक्स की मेहनत है, जो प्रैक्टिस है, तो उसका ये मैच बाहर भी हो सकते थे अगर हारते। उनकी कलकत्ता भी अच्छी टीम है, वो जीत जाती और दिल्ली जीत जाती, तो हम लोग बाहर थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच था। और 5 मैच के बाद जब हम बॉटम ऑफ द टेबल थे, तो हमारे मैनेजर्स ने बहुत हमारा साथ दिया, मोटिवेट किया, क्योंकि जो हमारे 3 से 4 लड़के जो फर्स्ट टाइम ऐसी प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हैं स्टेज पे, तो नर्वस थे काफ़ी। तो इन्होंने काफ़ी हेल्प किया, इनका थैंक यू दोनों का। इनकी वजह से ही हम दोनों अभी टेबल टॉप पे फिनिश करेंगे। वाह, बट देखिए अभी क्वालिफाई हो चुके हो विद दिस 18 पॉइंट्स। यहाँ पे बीट करने वाला बहुत मुश्किल है। मे बी एप्स आ सकती है, बट अभी का स्ट्रैटेजी क्या रहेगा? बिकॉज GPL फाइनल्स यहाँ पे माहौल ऐसा है, वहाँ पे और भी बड़ा रहेगा। जी हाँ, एप्स हमें क्रॉस कर सकती है, लेकिन फिर भी हम टॉप 2 पे तो रहेंगे। तो हमें 2 चांस मिलेंगे, लेकिन हमें सेकंड चांस तक नहीं जाना। फर्स्ट मैच में ही जीत के हम फाइनल जाना चाहेंगे, तो उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे सर। चलिए देखते हैं। अभी सिर्फ हाथ नहीं मिलाइए, आप गले लगाइए एक दूसरे मैनेजर्स भी, बिकॉज जो गेम इन सब ने खेला है, दिस वाज जस्ट अनबिलीवेबल स्टफ जो हम इन दोनों टीम से देख के आए। आई थिंक एक बेहतरीन, अगर हम बात करते हैं द क्वालिफिकेशन गेम बिटवीन दुबई वाइपर्स एज वेल एज लंदन राइनोस, एंड स्पेशली लंदन राइनोस को जो लिफ्ट ऑफ मिला विद देयर स्कोर दैट दे गॉट, आई थिंक वहीं पे वो कॉन्फिडेंस मिल गया। नाउ यस, दे हैव हैड देयर चांस, बट दुबई वाइपर्स, क्या उनको चांस मिलेगा कि नहीं, वो पता चलेगा दिन के अंत में, डिपेंडिंग ऑन द पॉइंट स्टैंडिंग्स। एंड इसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे एनालिस्ट तैयार है। चेतन एंड रोशन, टेक इट अवे।
is here. Maniacs wanted. अब आगे कुछ भी हो सकता है। निकर और टी-शर्ट पहन के आया साइकिल लोन लगा के फोन बता दे सबको बच के All flights to remain grounded. चारों गाड़ी जिद कर देगी। जो खुद की सुनते हैं दुनिया उनकी सुनती है। लेंस का आकड़ है, लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। Pressure does weird things to you. It's all about pressure. ये लाइनें मुझे कही थी एक खिलाड़ी ने जो हैं दुबई वाइपर्स के, और आज दुबई वाइपर्स bowed down to the pressure. London Rhinos have made history, become the first team to qualify for the knockouts of JetSynthesys presents the Global E-Cricket Premier League. With me is Roshan Shetty. Roshan, this is a landmark achievement from the London Rhinos. Dubai would be disappointed, but what a game and what an achievement for London. Well, right, I rightly predicted at the start, London are going to win this one, knowing the fact that, they're playing well as a team, which is what is important. Dubai, see, they take nothing away from them. They are a good team, but I think the over-reliance on the fact of with Mukesh and Manish is really killing them. You see what happened in the game. The moment Manish got out, it was the biggest setback for them, and they couldn't really recover from that. So that makes things a lot more difficult for Dubai. Let's take a look at the scorecards for the two sides. London Rhinos put into bat. And that's a stellar batting card. When you are under pressure, it's a must-win game. You want those 2 points. You want to secure qualification. Praveen, 46 not out of 20. Their brute player Tejas got out for 4. And then Sukhpreet, the captain. We spoke so much about him in the pre-show. Inspirational once again. 21 not out of 8 balls, 5 overs, 71 for 1. Roshan, that was a great batting performance. See, that's what happens, see, Dubai went forward to put London into batting. Right? And then when you have a score like 70 on board with you, you can't take risks there. You have to go there and, the first 2 overs go and hammer, which Dubai never did, in fact. Right, we'll also take a look at the Dubai Vipers batting card, and they had a tall order. और एक और बात भी थी दुबई के पास कि आप अगर हार भी जाओ, क्योंकि उनके 16 अंक हैं, अगर आप हार भी जाओ तो बुरे तरीके से मत हारना, because their run rate would take a further plummeting. Roy, their brute player, 14 of 7, gave them a good start. Mukesh, he opened the batting today, 21 of 12. But after that, after those 2 wickets, nothing much. Manish, that's the big blow for them, 8 of 5. Vamsi, 1 of 4. After Manish, there's not much batting. So the top 3 had to come up with the goods. It did not happen for Dubai today. Certainly did not. I mean, again, highlighting the point that the reliance on their Roy had to step up today. Knowing it's very important, I mean, what Dubai wanted to do is put London to bat, get them out on something like a 50 or something, and then go out and chase, which never happened. London, you must give them the credit for going all guns, creating the 70, and then eventually, getting the victory on board. Yeah, absolutely right. Credit to London Rhinos. Look at that bowling scorecard. Sagar with the wicket, Shivam with the wicket, Praveen with the wickets, and Sukhpreet. But look at Shivam's bowling figures. 1 over, 3 runs, and 1 wicket. That was the over where he put pressure on Manish, and Manish ended up getting out. That was the pivotal moment of the chase. And when you have, like I mentioned, 70, you have to start from the beginning. You can't really, stay complacent and say, okay, look what, let the power play go, you'll eventually come down hitting. This, this method, this formula where you're putting a team to bat, it will only work if you get the other team out well within a 50 or a 60 for that matter, knowing the fact that Dubai can also chase well. Yeah, and the bowling plans didn't work out very much for Dubai either. I mean, you look at Mukesh and Manish, those are the 2 most successful wicket-taking bowlers in the tournament, and they went for 30 runs together. That was another turning point. They bowled the 4th and 5th over respectively, did not take wickets, ended up going for 30 runs. There was no looking back for London after that. Absolutely, and when we did see a very good partnership as well eventually when you come down and see it, but again, the result from the centre is London Rhinos have officially qualified then, the first team for the playoffs out there for the first ever final. One thing is for sure, they're coming with us to Balewadi. Yeah, and we'll be waiting to see if Dubai join them. Remember, they are on 16 points, but there's a bit of a run rate calculation. For now, we are on to the man of the match, Praveen. Without 46 runs. Without a doubt. I mean,
This man has been batting incredibly. He was a little disappointed earlier on when I spoke to him, said that, you know, I mean, he had this very humble tone saying, भैया हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं हमारी टीम को जिताने के लिए. कभी-कभी luck साथ देता है, कभी नहीं देता है. आज मैं बताऊं, आपको कहना चाहूंगा, luck favors the brave, and you were absolutely brave on the field out there. And you know what? In the morning, we were talking about the different qualification scenarios, and Praveen said, we don't want the scenarios. We just know that if we win the game, we qualify. And kudos to him getting to 46 runs, and his runs were really, really vital. Let's take a look at the partnerships for London. 20, the opening partnership. कितना बड़ा pressure आ गया था प्रवीण पे जब तेजस जो उनके ब्रूट प्लेयर हैं वो चीपली आउट हो गए. And how vital was it for Praveen to stay there? मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखिए ऐसा पहले भी हो चुका है कि तेजस आउट हो चुके हैं और ऑटोमेटिकली प्रेशर नीचे आया हुआ. आई थिंक अब लंदन को उसकी आदत हो चुकी थी और दैट इज वर्कड इन देयर फेवर, व्हिच फॉर व्हाट इवन तेजस if he gets out earlier. Now again, this is not something that they would want to remember or cherish. The fact that Tejas has to come out, he is their brute batter, remember. If he doesn't fire, remember, there will be a lot more teams who are going to face now, knowing the fact that they're on to that grand finale. Yeah, let's take a look at the Dubai partnerships as well. 51 of 22 between Praveen and Sukhpreet, turning the game completely. और अगर हम यहाँ पे नजर डालें तो रॉय और मुकेश को थोड़ी सी बेहतर स्टार्ट चाहिए थी और मुकेश और मनीष को थोड़ी सी बड़ी पार्टनरशिप चाहिए थी, because it's all about these three batsmen. It didn't work out today for them, and they will be praying for other teams to do them a favor now. But I think that's not one situation you ever want to be in, you know. It's like a wait and watch for Dubai. But if I'm the captain of Dubai, I don't think I would want to be in that situation, certainly. Well, whatever they could have done, they went down and did that. But now again, it's left to the stars at the end of the day, how you go for and perform. But, you know, I think at the end of the day, you have to give credit to the way London have come up. We are talking about New York coming into their peak. There is also another team. Watch out, New York. The London Rhinos are here to give you a run for your money. And just talking about Dubai just a bit, I mean, there was always this question mark. What happens when Mukesh and Manish are not able to deliver? I guess they found out on this, I think, the worst possible day. Like I did say, you know, right at the start of the game that, you know, the over-reliance is going to hamper them. If, let's say for one sake, if Manish doesn't fire or if Mukesh doesn't fire, things are going to go haywire, and that's how it exactly went. Right, it's time to take a look at the 4s and 6s. The package brought to you by Bajaj Pulsar 125 Showstopper. Let's also take a look at the wickets brought to you by Lenskart. Well, it's time for the most important part of the post-match analysis. That's the points table. And London Rhinos will be very, very happy looking at that. Look at that. Absolutely. The first queue on the points table. London Rhinos, 14 matches completed for them, 18 points. And they will finish as the top two sides. Among the top two sides, really, they will wait for New York Apes. New York Apes, the other side that can get to 18 points, Roshan. I think it's important for them to finish top two.
Because at the end of the day, you know, you don't want to be in a situation where you're caught up in that eliminator, being the third and the fourth. So all the teams playing here. Now, see, from a math perspective, yes, New York have a chance to keep that alive and go forward, becoming the second team, but you don't know how things are going to go still. And that makes it a lot more interesting, in fact, a lot more competitive towards the end. And remember, we are down to the last league day, and we are still calculating the points of who are still going to be the another 3 teams out here. And you know what? Dubai Vipers, they have also finished their 14 matches on 16 points now. They have the points, but they don't have the net run rate. So they will be depending on the results of Mumbai Grizzlies versus Kolkata Hawks, which is the 4th match today. And then the final game of the day, that's New York Apes versus Delhi Sharks. A lot of prayers being said in the Dubai Vipers camp right about now. And that's the standings as of now on game day 11 after 2 matches, with just the 3 matches remaining. The standings brought to you by Dhruv Global School. We nurture confidence. And London Rhinos, obviously, then qualifying. And New York Apes, I mean, considering their high run rate and their points on the table, 16s as well, they have virtually qualified as well, but they will also be waiting for the result of the Kolkata game and the Delhi game. Of course, you know, but more from a very positive perspective, unlike Dubai, where they are, you know, saying, like, you know what, let's figure out, we look like we are out there, but not yet. New York Apes have nothing to worry about for now. Looks more on the side that they could go, but the question is, what is the position they'll be ending on? Right, 53 matches done in the round-robin league stage. We still only have 1 confirmed qualifier for the knockouts. Don't go anywhere. Lots more action coming up right after this short break. All new Pulsar Mania's here. Maniacs wanted. Piyush, hey, I was just on Lenskart. Your price at $999, right? नहीं करण रुपीज है I can't be seen wearing glasses under 1 lakh. Price थोड़ा ज़्यादा हो सकता है क्या? करण ये बढ़िया प्राइस है इट्स ओनली बिकॉज वी डोंट हैव मिडिलमैन 90,000 आप कहीं और से ले लो 80,000 आई एम गोइंग बाय अमीरों की हाई लगेगी तुझे फैक्ट्री वाले प्राइसेस नो मिडलमैन लेंसकार्ट डाउनलोड द ऐप लेकिन ये पाइप चलेगा फिनोलेक्स पाइप्स पीढ़ियां बदलेंगी पाइप नहीं